Welcome back to Python Fundamentals episode 3. I am Aditya Thakur. Twice now in episode 2, we ran into something and I told you we'll explain this properly later. We saw 2 plus 3 into 4 gives us 14, not 20, and I promised we would come back to it. We also saw chain comparisons like h, which is greater than 0 but less than 100, and I said the full explanation was coming later. Today is that day. Here's why this episode matters more than it might sound like on paper. Operators are the glue that holds every single Python program together. Every calculation, every decision, every condition in your code ever makes run through the operators we are covering today. Get this wrong and bugs show up in the strangest places, often ones that are genuinely hard to track down. Get it right, and entire categories of confusing error just stop happening. Today, we are covering four things: arithmetic operators, a full review plus a few we haven't touched yet. Comparison operators, you have used these, but we are going much deeper into it. Then logical operators, which are AND, OR, AND NOT. This is completely new today. And finally, operator precedence, the exact rule Python follows to decide what happens first in any expression, no matter how complicated it looks. That's the big payoff section. And it's where everything from today and honestly, everything from episode 2 as well finally clicks into place. As always, code along with me, don't just watch. Let's get into it. Let's start with arithmetic operators. There are seven sort of arithmetic operators in total. You have used almost all of these back in previous episode. Now let's try all of these in VS Code. Let me make a new file, Python C py. Let's try all of them. Print. Let's try the addition one. 2 plus 3. This is for addition, okay? Let me write addition in formats. Addition, operator, operator. Now next is subtraction. Print 3 minus 2. Subtraction, operator. Now print 3 into 2 operator, multiplication operator. Then now print 3 divided by 4 divided by 2. This is for division operator. Now let's print the remainder one, the modulo one, 3 modulo 2. This is known as modulo operator. We find remainder in this modulo. We have covered 5 of them. Now let's find the next one. Print. Oh, sorry, this was the floor one, not modulo. My bad. Floor. Now let's find the modulo one. This is the modulo operator. Modulo operator. Now next one, print 3 raised to the power 2. This is for the exponent. Operator. Now let's try all of these out. Run Python at Python terminal. See what we got. 2 plus 3, 5. Then 3 minus 2, which is for subtraction, 1. Then 3 into 2 multiplication operator, which is 6. Then 3 divided by 2, which is a division operator, which we got 1.5. Then the floor 1, 3, floor 2, 1, modulo 3, modulo 2, we got 1. Then exponent 3 raised to the power 2, we got 9. Now let's move on to unary operator. Unary means acting on a single value. The minus sign
flips the sign, the plus sign, no change, okay? There will be no change when you put plus in it, but it's a valid syntax. So let's try this out. X equals 2. Print minus of x. Let's try this one. Run Python. See, we got minus 2. As I told you, the minus sign changes the like whole sign. Print plus x. The plus sign does nothing. It won't change anything. Like if I change the value of x is equal to minus 2, then I print plus of x, there will be no change. Little no change. See, we got minus 2 only. So yeah, when we do like this, print minus of minus x, what will happen? We got 2. Like जैसा मैथ में होता है ना, ब्रैकेट के अंदर x जो है नेगेटिव में है और बाहर एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है. Like the same thing happened here. Now let's move on to the next one. Next one is combining operators. These are nothing but combining operators are the operators which are used to merge like multiple conditions together. Like in this example, we have the area of circle. What is the area of circle? Pi into radius ka square. So what we did here? Uh, we wrote radius, then we gave radius a value, then we are finding the area. So what Python does? Python पहले ना radius का square कर देगा, then it will evaluate it with, then it will multiply it with 3.14, which is the value of pi. Moving on to next one, we have arithmetic with mixed types. In this, what Python does, it performs arithmetic calculation with mixed types of values. Like in this example, we are adding two values which are of different types. Like 3, 3 is an integer and 2.5 is a float number, okay? And we are adding that. Remember from episode 2, true behaves like 1 in arithmetic. Python is very consistent about these type of promotion rules. Now let's just try this out. Uh, let's try this one. 3 plus 2. X is equal to 3. C is equal to 3 plus 2. As I told you that true behaves like 1. Now print Z. Let's see what it gives. अगर हम ये 1 की तरफ बिहेव करें ना, we'll get 4. See, we got 4. अब इसका टाइप भी देख लेते हैं एक बार. Print type of Z. Now let's run it again. See, इंटीजर आ गया. हमने क्या देखा था पिछली बार? लाइक फ्लोट करते हैं, फ्लोट को इंटीजर से ऐड करते हैं तो वो एंड में जो इसके टोटल होता है तो फिर वो फ्लोट में ही होता है टाइप में, ठीक है? Here also true acted like 1 and we added true with 3, then we got 4 which is an integer, so we got the class integer. Now moving on to next one. Here we have an example, a real world pattern example. Let's try this out. What we have value test one equals, what do we have? 80 something. Now test 2 equals 90. Test 3 equals 85. Now what we are doing, we are finding the average equals test 1 plus test 2 plus test 3.
and we are dividing it by 3 current average। सी इसमें हम क्या देख रहे हैं, अगर हमने ये ब्रैकेट नहीं लगाया होता ना तो ये सी 3 जो है, टेस्ट 3 जो है वो 3 से डिवाइड होता। इसमें जो विद विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस ये पूरा ही एवरेज हो रहा है, पूरा ही डिवाइड हो रहा है 3 से। नॉट, लेट्स चेक दैट्स आंसर रन पाइथन। 85 आ गया इसका आंसर। ओके, हाँ वी हैड अनदर वैल्यूज सी, उसका 85 ही आएगा वैसे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हियर वी हैव अ temperature conversion। Now let's check this one। Now let's check this example। What we have, सेल्सियस में है टेम्परेचर हमारे पास, 30 डिग्री रख लिया है, 30 रख लिया हमने, ठीक है। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का लेते हैं। फ़ारेनहाइट कितना करेंगे, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है सेल्सियस इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। सेल्सियस इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। Now let's print Fahrenheit। Print Fahrenheit। Now let's check this answer. Run Python। See, we got 86 as answer। See, हमने इसमें भी अलग वैल्यू थी तो ये आया। सी जो ये फॉर्मूला जो होते हैं ना, ये कॉन्स्टेंटली चेन हो जाता है, मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होती है साथ में चेन हो जाती है। जैसे हमने पीछे देखा था हमने वो चेन्ड वाला, मिक्सिंग वाला, दिस इज द सेम थिंग। इसमें पूरा ही जो कैलकुलेशन वो चेन होगी एक साथ में। Now let's move on to the next example, which is based on splitting a bill evenly with leftovers। Now let's check this one। Total cents equals 1000 रख लेते हैं, 1000 cents। People, how much people were there? 4 रख लेते हैं people को। Each gets equals total cents flow division of people, ठीक है। सब कुछ यही तो आएगा। हम इसमें कैसे निकालते हैं, इसमें सॉर्ट ऑफ हम एवरेज ही निकाल रहे हैं। 4 बंदे हैं, पूरा कितना है तो उसको डिवाइड कर देंगे टोटल को 4 से। Here we are doing the same thing। Now moving on to leftovers। leftovers leftover is equal to total cents modulo of people, remainder of people, is a leftover। Oh, let's print it। एफ स्ट्रिंग से एक बार ना एफ स्ट्रिंग से ट्राई करते हैं प्रिंट करने की। यू गाइस आल्सो ट्राई दिस विद एफ स्ट्रिंग, ओके। each phase which gives print over leftover cents। मैं इसको ट्राई कर लेते हैं, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। सी व्हाट वी गोट क्या है, ईच गेट्स इक्वल टू टोटल सेंट्स, ये हमने कर दिया। तो प्रिंट कितना हो रहा है, ईच पेज 250 cents एंड लेफ्ट ओवर इज 0 cents, ओके। Here we did the same thing, same। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये कंबाइन कर रहा है फ्लोर डिवीजन और मॉडुलो को, ठीक है, इन अ प्रैक्टिकल वे। दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक
mixed arithmetic operator thing. Moving on to the next one. Here we have an example. Pause the video and try this by yourself. Here, a rectangle has a width of 12 and height of 7. Calculate its area and its perimeter and print both clearly labeled. Perimeter is equal to 2 into width plus height. Try it out by yourself first, then you can watch the video. Now let's do this. Width was how much? 12, I think. And height was 7. Now area equals width into height. Now, but we have to find perimeter equals 2 into width plus height. Now let's print this expression. F string से वापस area and print this with this F string also. F enter perimeter. एक बार ना चेक कर लेते हैं इसको. Python file. हमें क्या मिला? Perimeter is equal to 38 and area is 84. Now let's check the answer. See, syntax is same. Here what happened? The parenthesis around width plus height force that addition to happen before the multiplication by 2. This is a small preview of precedence before I teach you the rule. Okay. Now let's move on to the next section of this video, which is comparison operators. Every comparison operator you're about to see always produce a boolean value, which is true or false. No exceptions needed. Now let's move on to it. Here, see, these are the examples. Let's try these examples and let's find out. Print 3 greater than 2. Let's try this out first. We got true, which is a boolean value. As I told you, comparison operator always returns a boolean value. Now let's try another one, another comparison operator. 3 less than 2, it will return false. Here we got false. Wait, this was वैसे ग्रेटर देन लेस देन में तो वही रखो ना इसको. लाइक ये 2 जो है लेस देन 3 हो गया, ये 3 जो है ग्रेटर देन 2 हो गया, तो वी कांट से दैट दिस इज अ ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर. Let's try another one. Print 5 greater than equals to 5. ट्राई करते हैं इसको. See, we got true. Let's see. Print 5 equals to 5. 5. Here we also got true. 5 not equals to 5. इसमें हमें false मिलेगा. See, 5 we got false here. See, the equals and equals negative is the most common beginner bug. Sorry, my bad. The equals and single equal to is the most common beginner bug. The double equals and a single equal is the most common beginner bug. What happens in single equal? Single equal means you are assigning a value, and double equals to means the type and the value must be equal in the both of the expressions.
expression on the left side and expression on the right side. Both the values must be of the same type and must be same. Now let's try one. X equals 10, print x equals 10. एक बार देख लेते हैं क्या आ गया। इसमें आ गया ट्रू, ठीक है। अगर हम इसी में ही अगर हम लिख लेते 1, 1 इज इक्वल्स 10, सी फॉल्स आ जाता है इसमें। अगर ये 10 है तो उतना ही आ रहा है। अगर हम 10.00 लिख लेते हैं विच इज अ फ्लोट टाइप, सी इसमें फॉल्स आएगा हमें। ओ माय बैड, द फ्लोट टाइप तो चेंज हो जाता है ना इसमें फॉल्स नहीं आएगा। फ्लोट टाइप तो चेंज हो जाता है। ट्रू। नाउ लेट्स कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। x इक्वल्स, लेट्स सी, प्रिंट नॉर्मली कर लेते हैं हम, नॉर्मल प्रिंट से ही। 5 इक्वल्स 5.0 इक्वल्स इक्वल्स कर लेते हैं, कंपेयर कर लेना हम। 5.0 इसमें तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। एज आई टोल्ड यू। नाउ प्रिंट 5 इक्वल्स string of 5 and print string of 5 equals 5। अब इसको देख लेते हैं एक बार। रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल सी। it happened here and the parameter name file is, oh, equals now let's run it। क्या है ये पहला, ये लास्ट वाला क्या है? स्ट्रिंग इक्वल्स स्ट्रिंग, ट्रू आ गया। इसमें एक सेकंड लास्ट वाले में क्या है? एक में इसमें हमने स्ट्रिंग इनपुट किया है और एक में हमने इसमें नॉर्मल इंटीजर इनपुट किया है। तो इसमें टाइप टाइप जो चेंज हो गए, तो ये टाइप की वजह से ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट वन 5 इक्वल्स 5.0, ये ट्रू हो जाता है। फ्लोट इंटीजर चेंज होता है। x इक्वल्स 10, ये तो पुरानी वो है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ लेट्स कंपेयर स्ट्रिंग्स इन डेप्थ, हो गया। Let's take these examples and check out the answer. See, string comparison जो होता है अल्फाबेटिकल में इज केस सेंसिटिव। कैपिटल लेटर जो है लोअर लेटर से पहले आने चाहिए, आते हैं हमेशा के हमेशा। अगर एक साइड में हमने कैपिटल लेटर लिख लिया है, एक साइड में लोअर लेटर लिखा है, तो वो सेम कभी वैल्यू सेम नहीं होगी। लेट्स चेक आउट द एग्जांपल। एप्पल इक्वल्स एप्पल, ये दोनों सेम है, ठीक है। लोअर केस है दोनों के दोनों। व्हाट वी गोट ट्रू। next one now, print apple equals apple from python। फॉल्स हो गया क्योंकि केस सेंसिटिव है ना ये। let's try another one, print apple बनाना, इसमें हमें आएगा, इसमें आएगा लेस देन। वेट, लेस देन बनाना, इसमें ट्रू आएगा। क्या सी ट्रू आ गया ये। बी ए से बड़ा होता है ना, पूरा ही बड़ा है, वैसे स्ट्रिंग ही बड़ी है इससे, एप्पल से। अगर हम लिखे हैं प्रिंट एप्पल, false, this will false. The string comparison is alphabetically and case sensitive. Capital letter actually comes before the lowercase letters in Python's ordering. Okay. Here in this example, this the same thing happened. See, the here we have a higher case letter and here we have lowercase letter. So what happened is the S
higher case letter comes before the lower case letter, we got false. बनाना छोटा होगा फिर इससे एप्पल से, सो वी गॉट false. यहाँ पे बट इज द बनाना बी बड़ा होता है इसे, तो वी गॉट ट्रू. इसके वैसे स्ट्रिंग की लेंथ भी बड़ी है, बट this is what happens. Now let's move on to the next one. Chain comparison series. See, here both lines do the same thing. Chain comparison are just cleaner. We'll use these in next section, okay? Next upcoming section of the video. Let's do these comparisons in VS Code. H equals, so how much was the age? 25 more. H, 18. The data equals to what was the example and था बीच में हाँ age 65 ये था शायद. रन करते हैं इसको एक बार. दोनों में ट्रू आ गया, ठीक है. एज तो बड़ी ही है 18 से, वी हैव 25. एज 18 से बड़ी है और एज 65 से छोटी है. इसमें एंड डाल दिया इसमें. सी व्हाट हैपेंड, इसमें हमने ना एक ही बार में ये पूरा एक्सप्रेशन लिख लिया, एक ही बार में, विदाउट यूजिंग एनी लॉजिकल ऑपरेटर इन बिटवीन द दीज टू एक्सप्रेशंस. इसमें क्या किया हमने, अलग अलग लिखा है. एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, यहाँ पे एज लेस देन इक्वल्स टू 65, बीच में लगा दिया हमने एंड. तो हियर इज वी गॉट ट्रू एंड हियर आल्सो वी गॉट ट्रू. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Comparisons inside if ready conditions. Storing a comparison result in a variable like this is extremely common. It reads almost like a sentence, and we'll use this exact pattern in the upcoming episodes. Let's try this question. What we have. Let me check. Temperature 72 is comfortable. Let's see. क्या रहता है? Temperature equals 72 and is comfortable. 68. Temperature which was greater than equals to, which was it? 76. 76. हम ट्राई करते हैं इसको एक बार, ठीक है. करंट एफ स्ट्रिंग से करेंगे वापस प्रिंट, ठीक है. जितना ज्यादा एफ स्ट्रिंग हो सकता है उतना ज्यादा करो, क्योंकि ये ज्यादा क्लीन होता है एफ स्ट्रिंग. कंफर्टेबल. चेक करते हैं इसको एक बार ना. कंफर्टेबल आ गया ट्रू. सी टेम्परेचर है हमारे पास क्या है 72 एंड हियर कंफर्टेबल कितने, इसके थ्रेशोल्ड कितने कंफर्टेबल का 68 और 76 के नीचे, तो वी गॉट ट्रू as we have temperature 72. Now here we have another question. uh See, pause and try this question by yourself. What we have, create two variables holding two different prices, print which one is more expensive using a comparison operator directly inside an f string. Bonus, check if they are exactly equal. Now let's try this out. एक बार ना पोस्ट कर लेना वीडियो, खुद से देख लेना, कर लेना ना एक बार. डिड वी हैव एनी, नहीं, कोई वैल्यू नहीं थी.
प्राइस ए 40 लेते हैं, फ्लोट में लेनी है वाली। प्राइस बी 35.99 पैसा। प्रिंट एफ ए इज costly costlier than B, price of A greater than or equals to price of B, बड़ा भी लिखा है और प्रिंट स्ट्रिंग में वापस क्या लिखा है, इक्वल का दिया है या बड़ा करने का दिया, मोर एक्सपेंसिव। इक्वल वाला देख लेते हैं ना एक बार, और इसको कर देते हैं, price is equal, बी। एक बार चेक कर लेते हैं, ए इज कॉस्टलियर देन बी, ट्रू आ गया, ए ज्यादा महंगा है बी से, एंड द प्राइस इज इक्वल, फॉल्स आ गया। ये सेम नहीं है, अगर हम इसमें इक्वल दे देते हैं, लेट्स सपोज 40.00 दे देते तो ये आता ट्रू। ए इज कॉस्टलियर देन बी नहीं, सेम है, ये इक्वल है, द प्राइस इक्वल्स ट्रू, आ गया ना इसमें। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सी क्या था, सेम ही है बिल्कुल। Moving on to the next one, here we have logical operators. In logical operator, we combine multiple conditions into one using operators like and, or, not. Let's check an example. Let's take this example. See, age 5 plus ID equals, so can enter equals age. एक बार ट्राई करते हैं, इसमें क्या किया हमने, इसमें क्या किया हमने, किया है एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज। सी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड हैज आईडी। एंड क्या करता है, एंड देता है, अगर दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होगी ना तो वो ट्रू देगा वैल्यू। लेट्स सी, वी गोट ट्रू, and only produce true when every single condition on both of the sides is true. If one of those conditions is false, then the whole value will be false. Okay, whole thing will be false. Now let's move on to the next logical operator, which is or. Let's try this example for or. uh, has cash था ना, cash equals false था इसमें, false, has card equals true, can pay equals has cash,
कैन पे। सी इसमें ट्रू आ गया। सी or operator only needs one side to be true, no matter what if the other side is false, and if the one of them is true, then we'll get true. It's only false when both of the sides are false. Okay. Moving on to next logical operator, which is not only just, it simply flips whatever Boolean expression is given. The true one becomes false and the false ones become true. Let's check this example out in our own VS Code. Is raining equals false, print not raining is open. It's open. इसमें आ गया false, इसमें आ गया true. See, is raining equals to false था। हमने क्या किया, हमने नोट लगा के इसको फ्लिप कर दी, इसकी पूरी वैल्यू, तो हमें मिल गया ट्रू। इसमें इज ओपन था ट्रू, और हमने इसमें नोट लगा के इसकी पूरी वैल्यू फ्लिप कर दी, तो इज ओपन हो गया फॉल्स। Now let's move on to the next operator. Oh, see, here we are combining all of those operators together in this example. Let's check out this example. सी रियल प्रोग्राम्स जो है ना, वो सारे के सारे जितने ऑपरेटर्स होंगे ना, उसमें पूरे स्टैक पे होंगे सारे ऑपरेटर, ये अलग अलग करके नहीं आएगा। जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होंगे उसमें, एक बार ना इसको चेक कर लेते हैं हम। एज इक्वल 16 प्लस ट्रू, equals to age equals to यही था ना उसमें, और हैज परमिशन, ठीक। और प्रिंट कर देंगे इसको हम, कैन वॉच, और कैन नॉट वॉच के लिए करेंगे is equal to, इसमें हमने कैन नॉट वॉच में क्या किया, हमने इसकी जो ऊपर वाले के जो कैन वॉच की कंडीशन थी ना, उसको फ्लिप कर दिया कैन नॉट वॉच के लिए, तो ये इसका अलग आ जाएगा। See, we got cannot watch is equal to true, can watch is equal to true, sorry, can watch is equal to true and cannot watch is equal to false. False. इसमें क्या हुआ, ऊपर एज जो थी 16 थी, बट विच इज नॉट ग्रेटर देन 18, बट द पर्सन हैड परमिशन, तो इसमें और यूज हुआ है। और में अगर एक भी ट्रू होगी वैल्यू तो विल गेट ट्रू। ओके, तो इसमें हो गया ट्रू। और इसमें कैन नॉट वॉच में क्या किया हमने, इसकी पूरी जो ये कैन वॉच की जो जितनी की जितनी कंडीशंस थी, इसको पलटा दिया पूरी पूरी कंडीशंस को। अगर ये पूरी कंडीशंस फॉलो नहीं होंगी, तब ये पर्सन जो है वो वॉच नहीं कर पाएगा। सी, दैट्स व्हाई वी गॉट फॉल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Here we have an example of login validation. uh, let's check this out. We have username equals आके लिख देते हैं region 98, then password length equals to 8, then valid
username greater than equals to 5, sorry, valid password equals to pass greater than or equals to 8. कैन लॉगिन था इसमें लिखा हुआ। equals to valid username and valid password। प्रिंट कर देते हैं इसको, स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करेंगे। ओके, ट्राई कर देते हैं इसको। कैन लॉगिन इसको टू ट्रू, बिकॉज हमारी पासवर्ड की लेंथ जो थी 8 की है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, पासवर्ड लेंथ 8 है। यूजर नेम की लेंथ जो 5 से बड़ी होनी चाहिए, वी हैड 7। इसमें वैलिड पासवर्ड लेंथ भी 8 से बड़ी होगी। कैन लॉगिन इज टू वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड। सी, तो इसमें अगर ट्रू, सी दिस इज a genuinely how basic login validation works. Multiple independent checks combined with and before a final decisions. Okay, now let's move on to the next one. Here are the truth tables. Remember these truth tables for your and or operator. ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा एंड में। फॉल्स ट्रू होगा तब भी फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स होगा तब भी फॉल्स ही आएगा ट्रू में। और में क्या होगा, ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स होगा तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू होगा तब भी ट्रू आएगा, बट फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। Let, let's see what's next. Short circuit evaluation. See, Python stops evaluating and as soon as it hits a false, ठीक है। जब जब भी तुम्हारा false आ जाएगा तो ये Python evaluate ही नहीं करेगा उसके बाद। It already knows the answer, so it doesn't bother to check more. Let's check this one. Check function. Print. Wait. Function only. Print. I ran. Return true. Result equals, इसमें क्या होगा, ये पाइथन जो है ये फोर्स दे के इसके आगे का इवेलुएट ही नहीं करेगा एंड में, ठीक है। अगर ये चेक पहले होता, ठीक है, अगर हमने फोल से पहले चेक लिखा होता तो ये चेक का इवेलुएट करता, फिर उसके बाद फोल्स भी इवेलुएट कर लेता, बट इसमें इसने पहले ही फोल्स देखा तो ये इससे आगे इसको इवेलुएट करेगा ही नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
Here we have a question. See, read this question and try it by yourself. Then you can watch the video. What we have. A user can access a website admin panel if they are logged in and have admin permissions. Create the two Boolean variables, combine them with a logical operator, and print whether access is granted or not. Let's try this question. Logged in equals true रख देते हैं. Oh shit. Is admin equals false कर देंगे, ठीक है. As access was. Wait. Oh, print as access is granted as access. चेक कर लेते हैं इसको. Access is granted is equal to false. See, what we had logged in equals to true is admin equals to false. इसमें हमने logged in को पहले चेक कर लिया इसमें, ठीक है, इवेलुएट कर लिया. फिर उसके बाद हमने इसकी दूसरी कंडीशन को भी इवेलुएट करना है. इज एडमिन जो आ गया false आ गया, तो बिकॉज ऑफ एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू इक्वल्स ट्रू, ट्रू एंड false इक्वल्स false. तो here we got false. अगर ये पहले होता ना इज एडमिन, तो ये logged in को चेक भी नहीं करता, इवेलुएट भी नहीं करता इसको. ये false देख के इसको इसको आगे का इवेलुएट नहीं करता. जैसे अगर ये इज एडमिन को लेफ्ट साइड रख देते, हम लोड इन को राइट साइड रख देते, तो ये इज एडमिन जो है वो इवेल्यूट होगी, इसके बाद ये इवेल्यूट नहीं हो पाता. Now let's move on to the next one. See, this is the same syntax as I wrote. What's happening here? Even though the user is logged in and requires both sides to be true, since is admin is false, access is correctly denied. This is what happened. And moving on to the next one, here we have operator precedence. This is the section we have been building toward all episode. Let's finally answer the questions from the very start. Back to where we stand. See, multiplication has a higher precedence than addition. So Python evaluates multiplication, then it evaluates addition. See, here what happened. It evaluated the multiplication first, then it evaluated the addition. So we got like 3 into 4 equals to 12, and then it added with 2, we got 14. As we have wrote here, multiplication has higher precedence than addition. एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको अपने में, ठीक है. Print 2 plus 3 into 4, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या 14 ही आएगा, ठीक है. Now let's move to the next slide. See, remember this precedence table. तो सबसे हायर प्रेसिडेंस होती है इसकी parenthesis की. Then we have exponent, then we have unary which is plus minus or not. Then we have multiplication, division, flow, division, modulo. Then we have addition, subtraction. Then we have comparison operators. Then we have and, which is logical and. Then we have logical or. Just remember all of these. जब तुम्हारा कोई भी expression like कोई भी calculation होगी, तो ये precedence यूज होगी बहुत ज़्यादा पाइथन में, काफ़ी यूज होती है. Let's check this one. Working through complex expression, 2 plus 3 into 4 exponent of 2 minus 1. ठीक है, चेक करते हैं इसको. प्रिंट रिजल्ट लिखते हैं, पर रिजल्ट
क्या था? 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका पावर 2, then -1. Then this is then Python आ गया 49. ठीक है आंसर. What was the first step? The first step was the exponent one. 4 की power 2. This was the first step. We got 16. Then what was the second step? The second step was 3 into 16. 3 into 16. Here we got 48. Then the next step was 2 plus 48. This one. 2 plus 48. Then we got 48 plus 2, 50. Then the last step was -1. So if 50 minus 1 is equal to 49. Let's check the sentence. See, the steps were same. Exponents first, then multiplication, then addition, and then subtraction, left to right. Follow this precedence table step by step every time you do any calculation, okay? Every time. You have to follow this table. Let's check this one when in doubt. When you are in doubt, any sort of doubt, just use parentheses. Let's check this one out. Confusing equals 10 minus 2 minus 3. Print confusing. And here clear. See, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ना तो see how confusing it is. बहुत ज़्यादा. अगर हम इसको ऐसे लिखें, clear equals 10 minus 2 minus 3. What will happen? तो इसमें पूरा ही साफ दिख रहा है, पूरा क्लियरली दिख रहा है कि 10 minus 2 होगा पहले, देन 3 से माइनस होगा ये. ठीक है, 3 माइनस हो गया इसमें. प्रिंट कर देते हैं एक बार. लेट्स चेक आउट द आंसर विल बी सेम. पाइथन फाइल टर्मिनल. सी 5 and 5 सेम ही आंसर था. Same precedence operator evaluates left to right, so both give 5, okay? But the second version is instantly readable. It's very, very readable. Parentheses cost you nothing and it removes all of your doubt. Use them generously in your own code. Now let's check this comparison one. ये वाला चेक करते हैं एक बार. ठीक है, एज इक्वल्स कितनी थी? 20 थी एज. देन हैज टिकट था उसमें. टिकट इक्वल्स ट्रू था. एंड we got true. See what happened here. See, comparison sits higher in the table than AND operator. So Python fully resolves the comparison one first, then it resolves the AND operator. Okay. Uh, so we got true. Let's move on to the next one. This is a tricky one. Okay. Here we mixed AND and OR together. Let's check this one first. No, result equals OR. We got true. See, AND has higher precedence than OR. Okay. So
Just like multiplication has higher precedence than addition, same underlying idea, but different operators. सी इधर एंड की ज्यादा है, तो ये एंड का सी फोल्स एंड फोल्स हो जाएगा, ठीक है। पहले फोल्स एंड फोल्स इज इक्वल टू वुड बी एट ट्रू, ट्रू और ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू ट्रू मिल गया हमें आंसर, ठीक है। सी स्टेप फोल्स एंड फोल्स फोल्स, सॉरी फोल्स एंड फोल्स ट्रू नहीं था, फोल्स एंड फोल्स फोल्स होता है, फोल्स सॉरी, ट्रू और ट्रू, ट्रू और फोल्स ट्रू। Let's move on to the next one. Note has higher precedence than, हाँ, जो नोट की होती है वो हायर प्रेसिडेंस होती है एंड और से, ठीक है। तो विल चेक वन एग्जांपल। रिजल्ट इक्वल्स, का आंसर वैसे ट्रू ही आएगा, क्योंकि ये नोट की ज्यादा प्रेसिडेंस होती है। नोट को पहले करेगा इसको कैलकुलेट, फिर उसके बाद करेगा ये एंड को कैलकुलेट। अगर नोट को बाद में कैलकुलेट करता तो फूल जाता। सी वी गॉट ट्रू। एक बार एक पूरा वॉक थ्रू कर देते हैं इसमें, पूरा ही ओवरऑल पूरा ही है इसमें। लेट्स चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। स्कोर इक्वल्स, here we wrote multiple operators together. Let's check this out. Score, क्या आंसर आएगा? स्टेप्स भी बताऊंगा आपको साथ में। We got 65, okay. Step number one, 28, sorry, 20 will get multiplied to 2. We got 40. Then 5 floor division of 3. We got 5. Then 100 minus 40, which we got 60. Then 60 plus 5, in which we got 65. So that's why we had 65. Now here's a question. You guys pause the video, try this question on your VS Code, then you can resume the video. Without running the code, predict the output on paper first. Result equals 5 plus 2 into 3 exponent 2 minus 4 floor 2. एक बार इसको पेपर में कर लेना है, ठीक है। उससे उसके बाद इसको कोड एक बार ट्राई करना, कोड इसका। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर वैसे 21 आएगा शायद। लेट्स चेक दिस आउट। Result equals 5 plus 2 into 3 exponent of 4. प्रिंट करते हैं रिजल्ट। What the hell? It is can't be 86, I think. No, what was the question? 5 plus 2 into 3. Oh, that's 2 minus 4. See, we got 21. Let me tell you the steps now. सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ है 3 raised to the power 2, in which we got, what we got? 9. Then 2 into 9. Here we got, how much we got? 18. Then 4 floor of 2. Here we got 2. Then क्या होगा इसमें? 5 into 5 plus 18 equals to 23. No.
क्या बच गया? 23 -2 बच गया ना, 2 बच गया। हियर वी गोट 21। कि पूरा प्रेसिडेंस, जिसको ये प्रेसिडेंस टेबल याद कर देना, जिसको याद हो जाएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस। Let's check out the answer. See, these are the same steps. This was the answer. Exponents first, then multiplication and floor division left to right since they are equal precedence, then addition and subtraction left to right. Okay. Now let's move on to the next slide. Oh, what's there? There's a bonus round. Okay, assignment operators revisited a full recap. Okay, this is a bonus question. What happened here? Let's try this out. एक बार ना इसको पोज करके खुद ट्राई कर लेना, आपको मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ। पोज दिस एंड ट्राई दिस बाय yourself. पर ये नोटबुक में ट्राई करना एक बार, ठीक है? उसके बाद ही करना। x इक्वल्स 10, ये तो नॉर्मल है, ठीक है? x प्लस इक्वल्स 5, तो इसमें क्या होगा? x, तो इसका क्या होता है? x इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है? देन x माइनस इक्वल्स 3, इसमें क्या होगा? x equals x minus 3, which is 12. हाँ, इसमें वैल्यू आ गई थी ना इसकी 12 कैसे? इसकी 15 वैल्यू आ गई थी ना, 15 माइनस 3 12 आ गया, ठीक है? x, what was the x, इसमें क्या होगा? x इक्वल्स x इंटू 2 हो गया, इसमें 12 24 हो गए। देन x फ्लोर डिवीजन हो, what was that? हाँ, फ्लोर डिवीजन equals to, इसमें what happened here, x equals x floor division 2, which is 3.0. Oh my bad. नहीं नहीं, तो वो 4, इसका 4 का 6 आएगा, 3 का डाल दिया मैंने। Then x एक्सपोनेंट ऑफ 2, इसमें क्या होगा? हैशटैग x इक्वल्स x रेज टू द पावर 2 एंड विल गेट 9, 3 की पावर 2 9 होता है, तो गेट 9। रन करके देख लेते हैं एक बार। लेट्स रन द कोड, सी। बार बार प्रिंट कराना पड़ेगा, वेट। प्रिंट x, वेट।
एक बार चेक कर लेते हैं सारे आंसर, ठीक है। 9, then 3, then 6, then 24, then 12, then 15. See, same answers हैं, same, exact same. Now let's move on to the next one. See here, what happened? Every arithmetic operator has a shortcut assignment version. Okay, you saw plus equals and minus equals in episode two. In the previous episode, we had an expression. No, as I remember, it was like x plus equals to 2, and I told you that we'll study it later. Here's the complete set, okay? Now let's check this one, the Wohler's operator. Let's check this code. N equals 10 greater than 5, print is n. प्रिंट करते हैं इसको एफ एन एन। See, this assigns and compares in one line. It's an advanced feature you won't need for a while, but you'll now recognize it when you see it in another people's code, in any other people's code. You'll see it and you'll recognize it. You won't need it right now. You will need it in next few episodes. Now let's move to the next one. Here's a question. Okay, pause this video, read this question, do it by yourself on your laptop or computer, whatever you have. Then you can pause the video. Okay. What's the question? Predict the output on paper first. See, result equals 10 greater, which is greater than 5, and 3 plus 2 equals 5 or 4. Then check your answer by running it. Pay close attention to which operator. Let's check this question. Result was 10 greater than 5, 3 plus 2. What false? एक बार ना इसको प्रिंट कर लेते हैं, एक बार एक्सप्रेशन देख लेता हूँ मैं, false वही आएगा। वैसे इसका ट्रू आएगा आंसर, जितना तक आई थिंक। प्रिंट रिजल्ट, सी ट्रू आ गया। सी व्हाट हैपेंड हियर, पहले क्या हुआ, 3 प्लस 2 हुआ पहले, फिर विच इज 5, देन 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू, 10 ग्रेटर देन 5 हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 5 इक्वल्स 5 हुआ, देन ट्रू एंड ट्रू हुआ विच इज ट्रू, देन ट्रू और फॉल्स हुआ विच इज ट्रू। सी, देन वी गोट द रिजल्ट ट्रू। Arithmetic resolves first, then comparison, then and, then or, the entire precedence table applied in the single expression. Okay, this was the single expression, and we applied the entire operator. That's now check this question. Pause the screen and try it on your own laptop or PC. Create variables for age and whether the person has a parent present. The person can watch if age greater than equals to 13 or they have a parent present. Also check if the ticket price with a $2 discount for ages under 13 is under $10. Print both results clearly using F strings. Pause now and attempt this fully. Let's check this question. Let's try this. Age equals 12. Okay. Let's suppose age is 12. Parent present, present,
equals to, so let's suppose then base price था उसमें ना plus 10, then can watch equals age greater than equals to 13 or parent present. Now let's check the discount. Discount equals to if age like 13 else see final price base price minus discount price discount is affordable is final price less than 10. Now let's print f string के अंदर print करेंगे वापस f can watch affordable. Now let's check this out. What happened here? Oh, my bad. See, can watch true आ गया, affordable भी true आ गया. See, a few things worth pointing out. Or combines two condition for eligibility. The comparison operator, which is greater than equals to, produces the boolean that feeds into or expression. Okay. Arithmetic calculates the discounted price, and the second comparison checks the affordability. That discount lines uses something called a conditional expression. A small preview of what's this is a small preview of what is coming up in some next episodes. Let's move to the next one. See, same wholesale. Let's probably recap everything we covered today because there was a lot. We started with arithmetic operators first, the full set of seven, including two we hadn't formally covered before, which was unary plus and minus. We saw them show up in real formulas like calculating a circle area, converting Celsius into Fahrenheit, and splitting a bill evenly using floor division and modulo together. Then we moved into comparison operator. We went deep onto the difference between a single equals for assignment and a double equals for comparison. Genuinely one of the most common bugs beginners run into. Then we saw how Python compares values across different types, how string comparison is alphabetical and case sensitive, and we connected chained comparison directly back to what was coming next. That brought us to logical operators, and which needs every condition to be true, or which only needs one, and note which simply flips a boolean. We build a full truth table for and or, so there's zero ambiguity left, and covered short circuit evaluations. The fact that Python stops checking a condition the moment it already knows the answer, which was like if the Python already knows that the the left condition is false, then it won't evaluate the right condition. Uh, then finally, operator precedence. The section this entire episode was building toward. We walked through complete precedence table from parenthesis all the way down to or, and worked through seven full expressions step by step.
including some genuinely tricky ones, mixing arithmetic comparisons and logic all in a single line. We close thing out with a full recap of assignment shortcuts, a quick preview of the Walrus operator for when you encounter it later in other people's code, and one big final challenge that pulled every single concept from today in one working program. If any of this felt like a lot, that's completely normal. Operator precedence especially takes real repetition to feel automatic. Just go back, rewatch the section that didn't fully land, and most importantly, actually type the code yourself rather than just watching the video. Okay. In episode 4, we are going deep into strings, slicing, every major string method, and full F string formatting. So hit the like button and subscribe button so you don't miss it. See you there in the next episode. Bye bye.